Hello everyone, welcome you all at India's largest online learning platform, Unacademy. Okay. First of all, let's start with a brief introduction about myself. My name is Ravi Yadav, and I have 8 years of teaching experience in the field of GATE and initial service examination. I have qualified GATE 5 times, and I have also qualified uh, written test of state initial service examination Uttar Pradesh and some other Maharashtra places like NTPC, SAIL, BHL, Coal India Limited. Okay. First of all, you all need to download Unacademy Learning app and get your subscription. After downloading this app, you will get daily live classes, live test and quizzes, structured courses and unlimited apps. डेली लाइव क्लासेस की बेनिफिट ये है कि आप अपने एजुकेटर से चैट कर सकते हैं, उनसे डिस्कस कर सकते हैं अपने डाउट्स क्लास में ही, राइट? पोल से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्विजेज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ऑल यू कैन डू व्हाइल द क्लास इज गोइंग ऑन। यानी मतलब एक फुल इंटरेक्टिव क्लास होगी आपकी। यू कैन पार्टिसिपेट इन लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। इससे आप अपनी प्रिपरेशन को इवेल्युएट कर सकते हैं, इसको जज कर सकते हैं कि आप कंपटीशन में गुड मॉर्निंग कहाँ पे स्टैंड कर, राइट? नाउ द स्ट्रक्चर कोर्सेज मीन्स whatever courses you are joining, like for GATE and engineering services examination, the courses at Unacademy is designed as per syllabus and examination pattern of GATE and engineering services. Unlimited access. If you miss the live classes, you can also watch the recorded session that will be provided to you by Unacademy. You will get chance to learn with the other top educators across India. Unacademy की जो GATE और इंजीनियरिंग सर्विसेज के जो बैचेस चलते हैं थ्रू आउट द ईयर, अलग अलग ब्रांचेस के लिए अलग अलग नंबर ऑफ कोर्सेज चलते हैं. लाइक फॉर मैकेनिकल देयर आर 24 courses, for electrical there are 18 courses, EC there are 10, CSIT there are 10 courses, like that. There are two kinds of courses that are available at Unacademy. One is the plus, other is the डिफरेंस दोनों में ये है कि यू विल गेट बेस्ट इंडियाज बेस्ट एजुकेटर, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स एंड पीडीएफ, लाइव टेस्ट है. ऑल दीज थिंग्स यू विल गेट व्हेन यू आर गेटिंग प्लस सब्सक्रिप्शन, राइट? ये सारी चीजें आपको आइकॉनिक में भी मिलेगी. यू विल गेट ऑल दीज थिंग्स इन द आइकॉनिक. बट अगर आप आइकॉनिक लेते हैं तो देयर इज अ यूनिक फीचर दैट इज गोइंग ऑन इन अकेडमी, दैट इज यू विल गेट अ पर्सनल कोच विथ होम यू कैन डिस्कस वन टू वन डिस्कशन आप कर सकते हैं अपने कोच से, अपने पर्सनल कोच से, अपने गाइड से, जिनसे जिनसे आप अपने डाउट्स, अपने एग्जामिनेशन की स्ट्रेटजी, प्लानिंग, ये सारी चीजें डिस्कस कर सकते हैं. आपकी जो टेस्ट एनालिसिस होगी दैट विल आल्सो बी पर्सनलाइज्ड अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस. स्टडी प्लानर यू विल आल्सो गेट टू बेटर स्टडी. The fee for plus subscription is for 24 months is 44,000. बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है इसमें, 1 month, 3 months, 6 months, 12 months and 80 months. But if you get 6 months or more, you will get no cost EMI also. For but if you are using this code Ravi PY, you will get 10% discount and you have to pay 39,600 fees only. Like 39,600 fees only. Iconic subscription is available for two courses, 12 months and 24 months. The fee is 50,000, 250 and 74,000 for 12 and 24 months respectively. But for 12 months, if you're using this code Ravi PY, you will get 10% discount. You have to pay 45,000 for 1 year and 66,600 for 2 years if you're getting iconic subscription at the. Okay, so जितनी जल्दी हो सके आप अपना सब्सक्रिप्शन ले लेंगे. But this is the best for you because here you will get the guidance, personal guidance. Now there is a batch going to start on 28 December. That is full-time batch that you can join and get your subscription. Okay, so let's start with the session today. We are discussing fluid machinery, the complete course on fluid machinery. We have already discussed some parts like impact object. We have already completed impact object, right? Hydraulic turbines. Right now we are discussing hydraulic turbines. इसमें हमने classification देख लिया है. Types like impulse and reaction turbine. Impulse turbine, that means Pelton wheel only kinetic energy available at the inlet. Now the reaction turbines, बहुत सारे turbines होते हैं, that is radial flow reaction turbines and axial flow reaction turbines means there will be kinetic energy
as well as pressure energy. Kinetic and pressure energy both that will be available at the inlet. Radial for reaction turbine that will we study the Francis, James Francis के नाम पे इसका turbine का नाम है that is Francis. Today we are going to study आज हम पढ़ेंगे that is Kepler, axial flow turbine, Kepler and propeller. अलग अलग turbine से आपको दोनों थोड़ा सा difference है that we will see here. Kepler and propeller. Okay. जो बेसिक बातें हैं जो उसको पूरे सब्जेक्ट में आपको याद रखना है, दो ही चीजें ऐसे जो पूरे सब्जेक्ट में कॉमन है इस थ्रू आउट द फ्लूइड मशीनरी. वन इज द जो बेसिक चीज है, जब भी आपको फोर्स लिखना हो यू जस्ट राइट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट. आपको फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट राइट रेट ऑफ मोमेंट चेंज ऑफ मोमेंट. जिस डायरेक्शन में आपको फोर्स लिखना है उस डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट, रेट ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट. इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम, दोनों में पढ़ा था दैट इज इनिशियल मोमेंटम माइनस इनिशियल माइनस फाइनल क्यों लिखते हैं दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. आप इसको देख लेंगे जाके. चलो वेलकम. राइट, इनिशियल मोमेंटम है माइनस. एंड द सेकंड थिंग जो वेलोसिटी ट्रायंगल था, एक तो फर्स्ट आपको ये याद रखना है थ्रू आउट द सब्जेक्ट, ये कॉमन है. एंड द सेकंड थिंग वाज वेलोसिटी ट्रायंगल दैट यू हैव टू रिमेंबर. तो हमने डिस्कशन किया था. This V1, this VR1, this is alpha, this is theta. This VR2, V2 and this is VF2, this VW2, this U2. अगर आपका ये है फर्स्ट से this U1, this angle is phi and this angle is this angle is phi and this angle is. ऑलराइट, ये वेलोसिटी एंगल है जो पूरे सब्जेक्ट में कॉमन है, सिर्फ टरबाइंस में नहीं. जब हम पंप पढ़ेंगे वहां पे वेलोसिटी एंगल यही होगा. कुछ डिटेल्स चेंज होंगी इसमें, कुछ बीटा थीटा जो भी एंगल्स है वो एंगल्स चेंज होंगे अलग अलग टरबाइंस में. दैट वी विल सी, जो हम एक एक करके देखते जा रहे हैं. थोड़ा सा डिफरेंस होगा लेकिन जो टर्मिनोलॉजीज है, जो टर्म्स यूज किए गए, एब्सोल्यूट वेलोसिटी V1, रिलेटिव वेलोसिटी VR1, VF1, ऑल दिस. ओके, नाउ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज वर्क डन पर. दिस यू हैव टू रिमेंबर. वर्क डन पर सेकंड इज रो ए P1 BW1 B1 प्लस माइनस BW2. दिस इज वर्क डन पर सेकंड एंड दिस इज कॉल्ड रनर पावर. यही वो पावर है जो आपका जो वाटर है इस वेन से जब फ्लो कर रहा था इस वेन के ऊपर, इसके पास कुछ आउटलेट एनर्जी होगी. राइट, आउटलेट की कुछ एनर्जी होगी, कुछ एनर्जी इसके पास इनलेट पे थी. दैट इज इनलेट में जो टोटल एनर्जी अवेलेबल थी दैट इज नेट है H. उसमें से कुछ पार्ट आपका डिस्चार्ज के साथ चला गया और कुछ पार्ट अगर इस वेन में लॉसेस नहीं है तो आपका रनर पे जो आपके रनर ब्लेड्स है, दिस इज रनर वेन, इस रनर वेन को ट्रांसफर हो गया. दैट इज कॉल्ड रनर पावर एंड दिस इज गिवन बाय दिस. या फिर हम लिखते हैं अगर वर्क डन पर सेकेंड पर यूनिट, इसको वेट से mg से डिवाइड कर देंगे. दैट विल बी दिस इज कॉल्ड Euler's equation for hydrodynamic motion. Now this is the power that is transferred to the vane while fluid is flowing over the tunnel. Hydrodynamic machines. ओके, ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी. फॉर्मूला कहाँ से आया था और ये इसकी टर्मिनोलॉजीज क्या क्या है, ये कब प्लस होता है कब माइनस होता है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस ऑल दोस थिंग्स. Now let's start with the today's session, that is axial flow reaction turbine. So what is axial flow reaction turbine? The water flows parallel to the
एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द शाफ्ट। जो आपका रेडियल फ्लो था, तो जो आपका एक्सिस था उससे रेडियली फ्लो कर रहा था, जहां पे वाटर फ्लोज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द शाफ्ट, द टर्बाइन इज नोन एज एक्सियल फ्लो टर्बाइन। हेड एट द इनलेट इज सम ऑफ काइनेटिक हेड एंड प्रेस हेड, ऑफ कोर्स क्योंकि एक रिएक्शन टर्बाइन, ये एक रिएक्शन टर्बाइन है, इसका मतलब कि इनलेट पे काइनेटिक एनर्जी प्लस प्रेशर एनर्जी, kinetic energy and pressure energy both will be available at the inlet. Shaft of an axial flow turbine is vertical, right? Something like this is the shaft. ये है आपका shaft जो हमने यहाँ पे दिखा रखा है. This is your shaft. This is your shaft. This shaft is vertical. और ये जो water flow की direction है जो आपको यहाँ पे दिखाई गई है, this is the direction of flow of water. This is the direction of flow of water flows in this. वाटर है वो इस डायरेक्शन में फ्लो करता है. द वाटर फ्लोज इन दिस. shaft is vertical. The lower end of the shaft is made larger, which is known as hub or wash. ये आपका shaft है, आप देख रहे हैं, इसमें भी देख रहे हैं. This is your shaft. This is your, यहाँ पे जो shaft में दिखा रखी है, इसका जो lower end है, this is made larger and it is called hub. दिस इज कॉल्ड हब और बॉस. हब और बॉस वो चीज होती है जहां पे आपकी जो ब्लेड्स होती हैं, दिस आर द रनर ब्लेड्स. ये रनर ब्लेड्स इस पे फिक्स्ड हो, और ये आपका जो हब और बॉस है दैट इज रोटेटिंग पार्ट, और रनर और ब्लेड्स जो होते हैं आपके इस हब पे फिक्स्ड. रनर ब्लेड्स आर फिक्स्ड. Vanes are fixed at the hub and it acts as the runner for the axial flow reaction turbine. जो आपका जो रोटेटिंग यूनिट होता है, उस रोटेटिंग यूनिट को ही हम कहते हैं आवर रन. उस रोटेटिंग यूनिट को ही हम रनर कहते हैं. बाकियों में जो आपके ब्लेड्स थी वो रेडियल, जो आपका रिएक्शन टर्बाइन दिखा था प्रीवियस लेक्चर आप देख लेंगे दोनों के लिए, रिएक्शन टर्बाइन के लिए भी और बेल्ट एंड व्हील के लिए. उसमें आप ब्लेड्स फिक्स करते हैं, वो जो आपका रोटेटिंग पार्ट होता है उस पर रनर. यहाँ पे जो हब है उस शाफ्ट के साथ जो है, तो जिसका डायमीटर इस शाफ्ट से थोड़ा सा ज्यादा लोअर एंड पे ज्यादा कर दिया, उसी पे अपने ब्लेड्स फिक्स कर दी. ये जो हब है दिस एक्ट्स एज रनर. ये जो हब है दिस हब एक्ट्स एज रनर बिकॉज दिस इज द रोटेटिंग पार्ट. ओके. और बहुत सारी चीजें हैं, रोटर है, गेट्स है, जनरेटर है, दैट इज डिफरेंट पार्ट. दिस इज द बेसिक्स ऑफ एक्सियल फ्लो रिएक्शन टर्बाइन. नाउ होता क्या है, बाकी सारी चीजें इससे सेम है. बाकी सारी चीजें जो आप फ्रांसिस टर्बाइन में पढ़ते थे उसमें सेम. फ्रांसिस टर्बाइन में क्या था, देयर वाज स्पाइरल केसिंग, राइट, देयर वाज गाइड वेन. ये जो चीजें हैं स्पाइरल केसिंग और गाइड वेन्स, दिस इज सेम एज दैट इन फ्रांसिस टर्बाइन, दैट इज रिएक्शन टर्बाइन, रेडियल फ्लो रिएक्शन टर्बाइन. डिफरेंस कहां पे है, जब वो गाइड वेन से, यहाँ पे इस गाइड वेन से जब वाटर फ्रांसिस टर्बाइन में एंटर करना था, दैट वाज एंटरिंग रेडियली, राइट. हियर इट इज एंटरिंग एक्सियल. दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन. ये जो शाफ्ट है दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन. ये शाफ्ट इसके अबाउट रोटेट कर रही है, इसमें आपने ब्लेड्स फिक्स कर रहे हैं. दिस शाफ्ट, राइट. आपका जो फ्लो हो रहा है दिस फ्लो इज लाइक दिस. द फ्लो इज लाइक, ये जो वाटर का फ्लो है, ये जो वाटर का फ्लो है, द वाटर फ्लोज लाइक, दिस इज द फ्लो ऑफ वाटर, दिस इज द फ्लो ऑफ, राइट, दिस इज द फ्लो ऑफ वाटर लाइक. जब इन ब्लेड्स के ऊपर वाटर फ्लो करेगा, एनर्जी इन ब्लेड्स को ट्रांसफर करेगा, दैट इज रनर पावर. दिस ब्लेड विल बी रोटेटिंग. ये ब्लेड जो है आपका यहाँ से रोटेशन will start rotating about this axis. Same thing is happening here. ये है आपका रनर ब्लेड, आपका दोनों साइड से. दिस इज केसिंग, केसिंग से आपका वाटर है, दिस इज फ्लोइंग लाइक, दिस इज पैरेलल टू द एक्सिस एंड द हब विल रोटेट लाइक. राइट. अब आपका रोटेट करेगा इसके बाद. इसके बाद यहाँ पे एक ड्राफ्ट ट्यूब लगाते हैं. ड्राफ्ट ट्यूब क्या होता है इसका मैंने ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दिया था आपको कल के लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में. इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर. ड्राफ्ट ट्यूब क्या होता है, स्पेसिफिक स्पीड क्या होती है, इसका यूज क्या होता है, दैट ऑल वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर.
होता क्या है कि जब ये टरबाइन है, जो टरबाइन का आउटलेट है, जो रिएक्शन टरबाइन का आउटलेट होता है, हर टरबाइन में नहीं होगा ये आपका, फर्स्ट टरबाइन में ये नहीं होगा, सिर्फ सिर्फ रिएक्शन टरबाइन। तो रिएक्शन टरबाइन्स होती है, इनकी आउटलेट पे प्रेशर जो होता है, इनके आउटलेट पे जो प्रेशर होता है, प्रेशर एट आउटलेट इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बाहर प्रेशर ज्यादा है, इसके एग्जिट प्रेशर कम है, तो जो वाटर यहां से आ रहा था, ये जो वाटर है, इस वाटर ये जो वाटर है, ये वाटर बाहर एटमॉस्फेयर को डिस्चार्ज नहीं हुआ है, राइट। ये आपके लिए तो अच्छी बात नहीं है कि अगर आपको वाटर डिस्चार्ज नहीं हुआ, इसका मतलब कि टरबाइन आपकी रन नहीं करेगी, वाटर को आपको डिस्चार्ज करना ही करना है, राइट। तो वाटर को आपको डिस्चार्ज करना ही है, इसका मतलब कि आपको जो प्रेशर है एट द एग्जिट ऑफ टरबाइन, एट द एग्जिट ऑफ रिएक्शन टरबाइन, दैट हैज टू बी इंक्रीज्ड, और उसको इंक्रीज करने के लिए हम लगाते हैं, कुछ नहीं होता, एक सिंपल इंक्रीजिंग एरिया का आपको दिख रहा है, तो जो एरिया है, दिस एरिया इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग एरिया का एक ट्यूब लगा देते हैं। आपको सिंपल बर्नौलीज इक्वेशन पता है, the velocity, sorry, area of flow is increasing, that means velocity is decreasing, that means the pressure is increasing। यही करते हैं हम, सिंपल एरिया फ्लो बढ़ा देते हैं, उसका वेलोसिटी कम हो जाती है, प्रेशर इंक्रीज कर जाता है बिकॉज ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ सिंपल, और कुछ नहीं। तो हम पढ़ेंगे ड्राफ्ट ट्यूब में और क्या क्या फायदे होते हैं, लेकिन फिलहाल आपको ये समझ में आ गया, ये आपका ड्राफ्ट ट्यूब लगाते हैं, जो आपका कंपोनेंट्स है, ये आपका रनर है, ये जो ब्लेड्स है, इससे आपने ब्लेड्स फिक्स कर दिए, जिससे ओके। कुछ चीजें हैं इस केस, बाकी सब कुछ सेम, केसिंग कैसे होती है, बाकी जो गाइड वेंस है वो क्या है, वो स्टेशनरी है, दैट इज नॉट रोटेटिंग। गाइड वेंस का काम सिर्फ ये होता है कि आप जो वाटर एंटर कर रहा है शाफ्ट पे, दैट शुड एंटर विदाउट शॉक, राइट, दैट द इम्पैक्ट लॉसेस शुड बी मिनिमम। जो गाइड वेंस है सिर्फ उनका यही काम है, दैट इज स्टेशनरी वेंस, वो मूव नहीं कर रही, दीज वेंस आर स्टेशनरी, ओके। तो दो टाइप की टर्बाइन आप पढ़ते हैं, जो एक्सियल फ्लो टर्बाइन से बेसिक चीजें, बाकी हम क्वेश्चंस करेंगे तो देखेंगे, दैट इज प्रोपेलर टर्बाइन एंड कैपलन टर्बाइन। क्या डिफरेंस है दोनों में? होता क्या है कि एक्सियल टर्बाइन हम यूज टू करते हैं, कभी कभी जो हमारे पास जो हेड अवेलेबल होता है बहुत ही कम होता है, हेड अवेलेबल बहुत ही कम होता है, तो आपको क्या करना पड़ता है कि अगर हेड अवेलेबल कम है, तो अगर आपको उससे पावर लेनी है, तो आपको जो एरिया ऑफ फ्लो है इन वेन्स के बीच में, ताकि ज्यादा पावर ट्रांसफर हो जाए उन वेन्स को, आपको उनके बीच का एरिया फ्लो बढ़ाना पड़ता है, राइट। तो जो एक्सियल फ्लो टर्बाइन्स लेते हैं हम, ये इनके बीच का जो ये एरिया ऑफ फ्लो है, ये वाला एरिया ऑफ फ्लो यहाँ पे ये ज्यादा होता है, मतलब दिस एरिया फ्लो इज मोर। तो ये जो टर्बाइन्स है एक्सियल टर्बाइन्स, दीज आर सुटेबल फॉर लो हेड, राइट, दीज आर सुटेबल फॉर लो हेड। ज्यादा एरिया फ्लो आपने रख लिया है, हेड अवेलेबल कम था, लेकिन फिर भी जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो है वो बहुत ज्यादा नहीं होगी, क्यों? क्योंकि एरिया फ्लो आपने ज्यादा रख लिया है, तो वेलोसिटी ऑफ फ्लो बहुत ज्यादा नहीं होगा, प्रेशर आपका ट्रांसफर होगा, राइट। प्रेशर चेंज ही क्या होता है, जो रिएक्शन बार बार हम बात कर रहे हैं, रिएक्शन टर्बाइन, कल हमने डिग्री ऑफ रिएक्शन भी डिस्कस किया था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिएक्शन? ये जो प्रेशर चेंज हो रहा है, इसमें फ्लो के ड्यूरेशन, राइट, ये जो फ्लो हो रहा है टर्बाइन के जो ब्लेड्स के बीच में जो ये फ्लो हो रहा है, इस फ्लो में जो प्रेशर चेंज करता है, दैट इज कॉल्ड रिएक्शन, वही है आपका रिएक्शन। जितना ज्यादा प्रेशर चेंज होगा, उतना ही ज्यादा पावर आपकी ट्रांसफर होगी टू द वेन्स, टू द रनर। जितना ज्यादा पावर ट्रांसफर होगी रनर को, दैट इज रनर पावर ज्यादा मिलेगी, रनर पावर ज्यादा मिलेगी, दैट मीन्स की रनर पावर ही फाइनली ट्रांसफर होती है शाफ्ट को, दैट इज इन द टर्म्स ऑफ शाफ्ट पावर। मैंने पढ़ा था मैकेनिकल इक्वेशन। तो जितना ज्यादा पावर आप रनर को ट्रांसफर करेंगे, राइट, दैट रनर पावर will be ultimately transferred to the shaft, and that will be your shaft power, उसके लिए आपका जनरेटर है, ये जनरेटर रोटेट करेगा एंड फाइनली टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो होता क्या है कि हमारे पास हेड अवेलेबल कम है, हेड अवेलेबल कम है, हम एरिया फ्लो बढ़ा देते हैं, और अगर हमने एक्सियल फ्लो लिया है, तो जो आपका एरिया फ्लो बढ़ा दिया, वेलोसिटी ऑफ फ्लो कम होगी, प्रेशर उसका ज्यादा मिलेगा, जो आपको पावर है वो। तो प्रोपेलर टर्बाइन इज दो टाइप होते हैं, एक प्रोपेलर और एक कैपलन टर्बाइन। बार बार दोनों का नाम साथ में ही लिया जाता है, क्यों लिया जाता है, क्यों, बेसिक सा डिफरेंस अभी मैं बताऊंगा आपको क्या डिफरेंस है, बट लेट अस सी। प्रोपेलर टर्बाइन इज अ रिएक्शन टर्बाइन
रिएक्शन टर्बाइन का सिंपल मतलब सबको पता चल गया होगा अभी तक, दैट इज काइनेटिक प्लस प्रेशर एनर्जी बोथ अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम कुछ करते नहीं, पेल्टन व्हील में हमने एक जेट में कन्वर्ट कर दिया, राइट। बाकी जो रिएक्शन टर्बाइन में है, वाटर पेनस्टॉक से आया, इस केसिंग में आया, केसिंग सीधा आपने इस टर्बाइन ब्लेड में सेंड कर दिया। तो यहाँ पे जब ये इनलेट हो रहा था तो यहाँ पे प्रेशर भी था और काइनेटिक एनर्जी दोनों थे, इसमें वेलोसिटी ऑफ फ्लो है और प्रेशर भी, एटमॉस्फेयर प्रेशर में, राइट। वर्किंग हेड्स बिटवीन 4 मीटर एंड 8 मीटर, क्लासिफिकेशन मैंने बताया था, 80 लिखा, कहीं 60 लिखा होगा। लेस देन 60 मीटर इज लो हेड टर्बाइन। इट इज एन एक्सियल फ्लो डिवाइस with maximum possible flow area that will utilize large volume of water available at, right? आप चाहते हैं कि आपके पास जो हेड अवेलेबल है, अगर बहुत ऊंचाई पे आपके पास जो वाटर है, हेड का मतलब क्या है? पोटेंशियल है, पोटेंशियल एनर्जी जो उस पावर के, उस वाटर के पास, तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी उस वाटर के पास होगी, एच जिसे हम नेट हेड कहते हैं, दैट इज टर्बाइन तक आ गया। जो नेट हेड है, अगर ये कम अवेलेबल है तो आप ये चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा जो वॉल्यूम है वाटर का, उसको ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज किया जाए। कैसे यूटिलाइज करेंगे आप? एरिया फ्लो इंक्रीज कर देंगे तो ज्यादा से ज्यादा वाटर उस टर्बाइन से फ्लो करेगा, राइट। लेकिन होगा क्या कि अगर आपने बहुत ज्यादा वाटर फ्लो करा दिया, चार्ज ज्यादा हो गया, राइट, एरिया फ्लो आपने कम कर दिया। इसे अगर आपने डिस्चार्ज इसको लार्ज कर दिया, वॉल्यूम फ्लो रेट इसको लार्ज कर दिया, और अगर आपका एरिया फ्लो कम है, एरिया फ्लो कम है, जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो है दैट विल बी हाई। तो वेलोसिटी फ्लो बहुत ज्यादा हो जाएगी और ये आपको नहीं चाहिए होता, आपको नहीं चाहिए। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपके पास जो अवेलेबल हेड है वो कम है, एनर्जी आपको चाहिए पूरी की पूरी, तो आप ज्यादा वॉल्यूम फ्लो कराना चाहेंगे, जो डिस्चार्ज है वो ज्यादा कराना चाहेंगे उसके थ्रू, तो आपको एरिया फ्लो ज्यादा रखनी पड़ेगी, इसलिए ताकि उसका वेलोसिटी ऑफ फ्लो कम रहे। वेलोसिटी ऑफ फ्लो एक कम रहे मतलब एक लिमिट में, बहुत ज्यादा होगा देयर आर सम कंस्ट्रेंट कि बहुत ज्यादा वेलोसिटी फ्लो नहीं रह सकते, ओके। So in an axial flow device with maximum possible flow area that will utilize large volume of water available at low heads, still obtain velocity which is not too high, right? ये जो velocity of flow है ये बहुत ज्यादा नहीं होगी, still ये आपने बहुत ज्यादा वॉल्यूम यूज कर, बहुत ज्यादा वॉल्यूम यूज कर लिया है एरिया इंटू वेलोसिटी। तो अगर आपने वॉल्यूम बहुत ज्यादा, क्यू आपने हाई रखा है और एरिया फ्लो भी आपने हाई रख दिया, तो वेलोसिटी आपका चल जाएगा, ज्यादा होगा, लेकिन दैट विल नॉट बी टू हाई, राइट। लेकिन बाकी जो टर्बाइन थी, लाइक फ्रांसिस टर्बाइन, उसमें एरिया फ्लो कम होता है। अगर एरिया फ्लो कम है, वॉल्यूम फ्लो रेट आपने ज्यादा कर दिया, तो जो आपका वेलोसिटी ऑफ फ्लो है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो है, राइट, दैट इज इन द रेडियल डायरेक्शन, दैट विल बी हाई एंड दैट इज अनडिजायर्ड, ओके। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारे पास ये फायदा है कि इसमें एरिया फ्लो ज्यादा रखते हैं, यहाँ पे एरिया फ्लो हमने ज्यादा रख लिया, तो वेलोसिटी ऑफ फ्लो जो मिलती है ज्यादा फ्लो के बावजूद एक लिमिट। रनर ब्लेड्स आर फिक्स्ड एंड नॉन एडजस्टेबल। दो टाइप की चीजें होती है, इसमें आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे आपका ध्यान से देखेंगे, आई डोंट नो वेदर इट इज विजिबल और नॉट, बट लेट मी शो। यहाँ पे इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे आई होप दिस इज, अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एक नॉब टाइप का, राइट, एक फिक्स किया हुआ है। तो इसको इसको इसके अबाउट रोटेट कर, ये जो है दिस इज, इसके अबाउट आप रोटेट कर सकते हैं, एक पिवट टाइप का है जिसके अबाउट इसको आप रोटेट कर सकते हैं। तो दो टाइप की टर्बाइन होती है, एक ही जो ब्लेड्स है इसको जैसे नॉब टाइप के है, पिवट है, उसके अबाउट इसको आप रोटेट कर सकते हैं। इससे आप ये जो ब्लेड्स है इनका एरिया फ्लो कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं, उनको एडजस्ट कर सकते हैं, राइट। तो दो टाइप की होती है, एक जिसमें ये आपका नॉब से जो पिवट लगा होता है इसके बाद इसको रोटेट कर लेंगे और इस ब्लेड्स को एडजस्ट कर लेंगे, दैट इज कैप। लेकिन जो आपका प्रोपेलर है, इनकी जो ब्लेड्स होती हैं, दिस ब्लेड्स आर नॉन एडजस्टेबल, दिस ब्लेड्स आर नॉन एडजस्टेबल, ओके। स्पाइरल केसिंग एंड गाइड ब्लेड्स आर सिमिलर टू दैट, जो हमने पहले देखा था, तो बाकी सारी चीजें सिमिलर, ओके। नाउ द नेक्स्ट वन इज
Kaplan turbine. The next one is Kaplan. Let us see what is in Kaplan turbine. In Kaplan turbine, runner blades are adjustable and can be rotated about the pivots fixed to the hub or cause. यहाँ यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये चीज यहाँ पे आपको दिख रहा है। आई होप कि आपको ये चीज दिख रही है। यहाँ पे एक पिवट टाइप का ऐसे लगा होता है और इसके अबाउट इसको आप रोटेट कर सकते हैं। हर एक प्लेट लगा हुआ है, यहाँ पे भी लगा हुआ है ऐसे। इसके अबाउट आप रोटेट कर सकते हैं। दिस इज द पिवट। आप इसके बाद प्लेट्स को रोटेट कर सकते हैं, प्लेट्स को एडजस्ट कर सकते हैं। दिस इज द पैटर्न। ओके, plates are adjusted automatically. आपको करना नहीं होता। Alright, these are adjusted automatically by servo mechanism so that at all loads the flow enters without shock. Right? तो जैसे जैसे लोड वेरी करता है आपका जो एरिया ऑफ फ्लो है वो भी ऑटोमेटिकली वेरी कर लेता है। ऑफ कोर्स आप बार बार जाकर उसको घुमाएंगे वो ऑटोमेटिकली वेरी कर जाएगा। Thus high efficiency is maintained at the part load. अगर अपने फुल लोड पे नहीं भी वर्क कर रहा है, वो पार्ट लोड पे भी वर्क कर रहा है, तब भी उसकी एफिशिएंसी हाई मेंटेन होती है। ऑल्सो नोन एज वेरिएबल पिच प्रोपेलर टर्बाइन। सेम है जो कैपलन है, दिस इज सेम एज प्रोपेलर टर्बाइन। सिर्फ ये डिफरेंस है कि जो उसका पिच है उसको वेरी कर लेते हैं, जो उसका एरिया ऑफ फ्लो है उसको आप वेरी कर लेते हैं। दैट्स सिंपल। कैपलन टर्बाइन लाइक प्रोपेलर टर्बाइन इज हाई स्पीड टर्बाइन। स्पीड ज्यादा होती है। यूज्ड फॉर स्मॉलर लो हेड हाई स्पेसिफिक स्पीड टर्बाइन। ये मैंने आपको बताया था क्लासिफिकेशन में ही। दीज आर हाई स्पीड एंड हाई स्पेसिफिक एंड लो हेड टर्बाइंस। ये आपके पास बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच में, कैपलन और ओके। तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई। वाटर का फ्लो ऐसे होता है, यहाँ पे दिख रहा है दोनों डायरेक्शन से फ्लो होगा वाटर का, यहाँ से भी और यहाँ से, और इसके ऊपर से फ्लो करेगी। The flow that will be transferred, the power will be transferred, and this shaft will be rotating and the generator will be rotating. ये जो shaft है, this shaft is vertical. This shaft is alright. नीचे का diameter है that is more, that is higher, that is called hub or cause. तो blades fix होती हैं, right? Blades adjustable भी हो सकती हैं, non adjustable हो सकती हैं। Non adjustable है that means that is propeller. अगर adjustable है that means is a capillary. बाकी सारी चीजें सेम होती है। जो केसिंग है, ये जो आपने केसिंग दिखा रखा है, दिस केसिंग, दिस गाइड वेन्स, दिस एंड दिस इज सिमिलर टू द फ्रांसिस। ओके, तो आई होप कि आपको बेसिक समझ में आ गया कि एक्सियल फ्लो टरबाइन के साथ क्या होता है। बाकी सारी चीजें प्रिंसिपल उसका सेम है। लेट अस नाउ ड्रॉ द वेलोसिटी ट्रायंगल फॉर विल ड्रॉ द वेलोसिटी ट्रायंगल। मैं आपको फिर से बता दूं कि ये जो हम वेलोसिटी ट्रायंगल बनाते हैं ये हम एक जनरल लेके बनाते हैं। अलग अलग कंडीशन गिवन हो सकती है। ऐसा नहीं है कि हर बार आपका अल्फा कम होगा, अल्फा ज्यादा भी हो सकता है, थीटा भी ज्यादा कम हो सकता है, पाई और थीटा है वो भी कुछ भी हो सकते हैं अलग अलग टर्बाइंस के केसेस। लेकिन हम जो जनरल इक्वेशन बना लेते हैं, दिस इज V1, दिस इज VR1। V1 के दो कंपोनेंट है, VW1 हॉरिजॉन्टल एंड VF1। दिस एंगल इज अल्फा, दिस एंगल इज। जनरली हम जो लेते हैं एक्सियल फ्लो टरबाइन के लिए भी सेम ऐसे ही जैसे आपका फ्रांसिस टरबाइन था, बाकी सब कुछ लगभग सेम है। दिस इज जनरली बीटा 90 डिग्री होता है, नहीं होगा तो हम उसको देख लेंगे, जितना गिवन होगा उसको आप ले लेंगे। वो ट्रायंगल आपको बनाना आता है, मैंने आज ही दिखाया था उसको ड्रॉ। दिस इज 90
This is VR2, of course. This is V2. This is VW2. Oh, not VW2. This is बीटा 90 होने का मतलब सिंपल सा ये होता है रेडियल डिस्चार्ज एट आउटलेट. दैट मीन्स VW2 इज 0. दैट मीन्स V2 इक्वल्स टू. इतनी सारी चीजें आपको एक साथ समझ में आ जानी चाहिए. जैसे आपसे ये कहा जाए कि डिस्चार्ज इज रेडियल एट आउटलेट, दैट मीन्स कि आपका VW2 0 है, बीटा 90 है. दैट मीन्स कि जो V2 है इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपोनेंट है, दैट इज वर्टिकल कंपोनेंट, एंड V2 इक्वल्स टू V2. और इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, तो वेलोसिटी वर्टिकल है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी, तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है दैट विल बी 0. VW2 0 हो जाएगा, V2 इक्वल्स टू V, एंड ऑफ कोर्स दिस इज 0. ओके, दिस इज समथिंग लाइक. बाकी सारे नोटेशन सेम है जो आप अभी तक. आपसे पूछा जाए व्हाट इज रनर पावर हियर, तो बाकी सारी चीजें सेम है जो आप अभी तक देखते हैं. रो ए बी वन PW1 U1 प्लस माइनस PW2 रनर पावर, PW1 U1 प्लस माइनस PW2 U2. ओके, और अगर आपसे पूछा जाए इज वर्क डन पर सेकेंड पर यूनिट वेट, या फिर रनर पावर पर यूनिट, रनर पावर पर यूनिट वेट, दैट विल बी 1 by G PW1 U1 plus minus PW2. Alright, and of course the hydraulic efficiency, BW1 U1 U1 by this is PW1 U1 by. ये सारी चीजें सेम है जैसे आप पहले पढ़ते हैं, आज भी हमने इसको देख लिया. नाउ कुछ चीजें हैं जो हमें पढ़ना है. दैट वर्किंग डिजाइन प्रपोर्शन, दैट इज वर्किंग डिजाइन. क्या क्या होता है, एक तो आप इसमें देख लेंगे. यहाँ पे आप देख के बताएंगे कि जो टरबाइन है, जो आपको टरबाइन दिख रही है, जो हब दिख रहा है, इसमें एरिया ऑफ फ्लो कितना है. व्हाट इज द एरिया ऑफ फ्लो, हाउ मच इज द एरिया ऑफ फ्लो इन दिस. ये जो एरिया ऑफ फ्लो है जिसके ऊपर से वाटर आपका फ्लो कर रहा है, यहाँ पे इनलेट है, एक्सियल फ्लो है, दिस इज इनलेट एंड दिस इज आउटलेट. एरिया ऑफ फ्लो दिस इज सेम, राइट. तो एरिया ऑफ फ्लो है, तो पहला तो वर्किंग के प्रोपोर्शंस में आपको जो यूज करना है यहाँ पे, फर्स्ट एरिया ऑफ फ्लो एट इनलेट इक्वल्स टू एरिया ऑफ फ्लो एट आउटलेट. दैट मीन्स जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट इनलेट है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट, ये दोनों सेम है. velocity of flow at outlet, these two will be. Now second one, what is U1 U2. इसमें जो डायमीटर है इसको हम कहते हैं दिस इज आवर हब डायमीटर, दिस इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ हब, एंड दिस इज कॉल्ड, और ये दिस डायमीटर इज कॉल्ड DP, डायमीटर ऑफ गॉस या डायमीटर ऑफ हब, और ये दिस डायमीटर इज कॉल्ड DO. This diameter is called DO, outer diameter of runner. This is called outer diameter of runner, DO. तो जो वेलोसिटी, अब जो रोटेशन है, जो हम U1 निकले, एक चीज और होता है कि हम यहाँ पे जो ब्लेड्स है ये ओपन है. जो फ्रांसिस टर्बाइन थी उसमें एक रिम लगा, इनलेट पे भी एक रिम होती है, आउटलेट पे भी एक रिम होती है, लेकिन यहाँ पे कोई रिम नहीं होगी आपका ऊपर. ओके, ना यहाँ पे जो हम वेलोसिटी लेंगे U1 इनलेट पे भी एंड आउटलेट पे,
इनलेट और आउटलेट दोनों जगह जो हम वेलोसिटी लेते हैं वो कितनी होगी, राइट। वो दोनों ही हम, डायमीटर आपका ऐसे वेरी कर रहे हैं यहाँ पे हर जगह, इस डायरेक्शन में और यहाँ पे, तो यहाँ पे भी U1 U2 क्या होगा, सेम होगा। पेल्टन में भी क्या था, पेल्टन में हमने पिच सर्कल डायमीटर से लिया डी, राइट। जो डी डायमीटर था उसको हमने क्या, दिस आवर पिच सर्कल डायमीटर। यहाँ पे जो डायमीटर होगा दैट विल बी आवर आउटर डायमीटर। जो U1 U2 हो जाएगा, U1 equals to U2 equals to U, and that is 5 DO and 60, where DO diameter of DO outer diameter, DO is outer diameter. Outer diameter of DO is called outer diameter of tunnel. और यहाँ पे जो एरिया ऑफ फ्लो है, दिस एरिया ऑफ फ्लो इज 5/4 DO square minus DB square. D square, right? D square, what is DB? Is the diameter of, diameter of boss part, right? तो जो एरिया ऑफ फ्लो है, दिस एरिया ऑफ फ्लो, राइट, 5/4 DO DB स्क्वायर, ये आपका जहाँ पे हब है, इतना एरिया हटा देंगे आप, बाकी टोटल एरिया ऑफ फ्लो, जो आप, जो मैंने शेडेड करके दिखा रखा है ये वाला, दिस इज आवर एरिया ऑफ, दिस इज एरिया ऑफ 5/4 DO स्क्वायर माइनस 5/4 DB स्क्वायर, इनर डायमीटर, दिस इज एरिया ऑफ फ्लो, ये मिल गया आपको। नाउ व्हाट इज डिस्चार्ज, थर्ड वन इज चार्ज, the third one is discharge, third one is, and that is 5/4, Q is 5/4, discharge is area of flow into velocity of 5/4 DO square minus DV square velocity of, velocity of flow दोनों सेम है तो आप कोई भी ले सकते हैं, और वन का भी और टू का भी, डायमीटर एरिया भी दोनों का सेम है, एरिया फ्लो सेम है, दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ फ्लो आपका यहाँ पे भी सेम, राइट। इफ द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज सेम दैट मीन्स एरिया ऑफ फ्लो विल बी सेम। इतनी सारी चीजें थी जो आपको इसमें समझनी थी, आई होप बहुत ज्यादा चीजें नहीं, बाकी सब कुछ कॉमन है, जैसे आपने, मैंने पहले ही बताया था, आपने अगर पहला जो लेक्चर था वेलोसिटी ट्रायंगल का, उसको समझ लिया कि कैसे आप फोर्सेस लिखते हैं, कैसे रनर पावर लिखते हैं, कैसे हाइड्रोलिक एफिशिएंसी लिखते हैं, ये सब मैंने बता दिया था, तो एवरीथिंग एल्स इज गोइंग टू बी इजी फॉर यू, ओके। तो लेट्स सी, इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम इसके बेस्ड, एंड वी विल, आई होप ऑल दीज थिंग्स आर, होता क्या है कि आपके पास हेड अवेलेबल है वो कम है, एक वाटर बॉटल लो हेड पे अवेलेबल है, हेड अवेलेबल इज लेस, एंड उसके लिए आपको जो पावर चाहिए होगा, उसके लिए आपको ज्यादा वॉल्यूम फ्लो कराना पड़ेगा, ज्यादा वॉल्यूम फ्लो कराएंगे तो एरिया ऑफ फ्लो अगर कम रखा आपने तो वेलोसिटी ऑफ फ्लो बहुत ज्यादा होगा, इसलिए हम ऐसी टरबाइन यूज करते हैं जिसका एरिया ऑफ फ्लो ज्यादा हो, ताकि जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो है वो एक लिमिट में रहे, एंड दैट इज पॉसिबल इन द प्रोपेलर टरबाइन, दैट इज पॉसिबल इन द एक्सियल फ्लो, ओके। बाकी सारी चीजें सेम है, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करके दिखाता हूँ, यू ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। I'll give you 1 minute to read this question and then try to solve.
Calculate the speed and diameter of runner of a Kaplan turbine developing 6000 kilowatt under the effective head of 5 meters. Effective head, that means net. Overall efficiency of turbine is 90%. राइट, कई बार बता चुका हूं मैं कि जब भी आपको ओवरऑल एफिशिएंसी गिवन हो, ओवरऑल एफिशिएंसी का सिर्फ और सिर्फ एक यूज होता है टू फाइंड द डिस्चार्ज. राइट. Diameter of boss dB is given as 0.4 times external diameter of 0.4 times of external diameter, that is DO. dB equals to 0.4. Speed ratio given है and flow ratio. Speed ratio, flow ratio मैंने आपको पहले ही बताया था. U equals to psi 2G under 2GH. VF1 equals to phi under 2G. तो स्पीड रेशियो, फ्लो रेशियो तो आपने पहले ही पढ़ा था. वो सारी चीज यहाँ पे भी कॉमन है. तो अब तो जो चीजें हैं, दो चीजें अगर आप फोर्थ लिख लें, दैट इज स्पीड रेशियो. हालांकि हमने लिखा था पहले, वो तो सेम होगा. स्पीड रेशियो फाइव इक्वल्स टू 1/√2G. यूनिट यहाँ पे सेम है. एंड फ्लो रेशियो, स्पीड रेशियो अपने यू से ले लिया, फ्लो रेशियो फाइव से ले लेंगे. इस फ्लो रेशियो साई इज इक्वल्स टू BF1/√. प्रीवियस लेक्चर हमने देखा था वेलोसिटी रेशियो है. ठीक है, ये सारी चीजें हैं जो आप कैलकुलेशन, जो वर्किंग कैलकुलेशंस होते हैं टर्बाइन्स के, उनमें इन सब का यूज होता है. यहाँ पे आप इसको यूज. व्हाट इज गिवन? जो चीज गिवन है तो ये है. Power 6000 kilowatt, that means this is shaft power. Shaft power is given as 6000 kilowatt. Okay. Effective head, that is H, is given as 5 meters. Overall efficiency is given as 90%. Diameter of boss is 0.4 times diameter of the diamond. Speed ratio phi is given as 2.0 and flow ratio psi is given as. हमें स्पीड फाइंड करना है, दैट इज n. तो जो फाइंड करना है, n कितना होगा? स्पीड एंड डायमीटर ऑफ रनर, आउटर डायमीटर. डायमीटर ऑफ रनर इज आउटर डायमीटर. दिस वी हैव टू. ओके, तो सबसे पहले और ये सारी चीजें कहां से, ये दोनों ही चीजें मिलेंगी आपको सिर्फ एक ही जगह से. फाइव डी नॉट एन बाई 60. यू तो आपको मिल जाएगा. स्पीड रेशियो गिवन है, दैट इज 2. दैट मीन्स यू बाई √2GH. एच भी आपको गिवन है, तो यू तो आपको यहां से मिल जाएगा. राइट, यू मिल जाएगा, लेकिन डी और एन दोनों अननोन है. तो फिर कैसे मिलेगा? डायमीटर आपको कहां से मिलेगा? तो डायमीटर फाइंड करने का एक तरीका और, एरिया ऑफ फ्लो इनटू वेलोसिटी ऑफ फ्लो. एरिया ऑफ फ्लो इनटू वेलोसिटी ऑफ फ्लो. राइट. तो डायमीटर जो डीओ और डीबी का रिलेशन आपको गिवन है, यहां से वो मिल जाएगा. वेलोसिटी ऑफ फ्लो आपको मिल जाएगा, दैट इज फ्लो रेशियो गिवन है. फ्लो रेशियो गिवन है और स्पीड रेशियो गिवन है. यू मिल जाएगा और ये एफ मिल जाएगा, वेलोसिटी ऑफ. तो आई होप कि आपको हिंट मिल गया कैसे इसको सॉल्व करना है. नाउ यू ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. Let's just find the, let us find the solution. 2 equals to 5 under root 2.
So what is 5? 2 under root 2 into 9.81 into what is h? 5. So what will be the 19.8 meter per second? 19.8 meter. This is now what is df? What is df? That is chi under root 2. Chi is 0.6 under root 2 9.81 into h is 5 meter. Working under 5 meter low head turbine है आपकी जाहिर सी बात है अगर कैपलर है that will be working under a head of 60 head less than 60 तो ये भी हम देख लेते हैं 5.94 velocity of flow is 5.94 meter this is ये हमें मिल गया now what is discharge हमें कैसे मिलेगा we have overall efficiency इसको हम सॉल्व कर लेंगे and we will find this अगर हमें डिस्चार्ज मिल जाता है तो ये आपको now what is overall efficiency shaft power by water so what is shaft power that is given as 6000 kilowatt divided by rho 2h by 1000 rho g is 2h by 1000 that is given as discharge is given as 90%. 0.9 is 6000 divided by rho cancel हो जाएगा GQH that is 9.81 into 2 divided by 135 point right this will be 135 point from here 2 will be 135.9 meter cube 139.9 meter cube per correct 2 मिल गया आपको now you can find the answer from here q equals to 5 by 4 do square minus d into सब कुछ है यहाँ पे 5 by 4 you will write do square minus 0.4 times 4 whole square into d आप सॉल्व कर लेंगे यहाँ से आपको do मिल जाएगा आउटर डायमीटर that is equals to 135 point if you solve कर लेंगे from here you will get do जल्दी सॉल्व कर देंगे और फिर the do and do will be 5.9 do will be 5.9 alright you have आपके पास do एक आपको आंसर ये मिल गया this is our answer another thing is u equals to 5 don by 60 everything here is known u is 19.8 meter per second that means 19.8 equals to 5 do is 5.9 and from here you will get n equals to 64.64.09
64 rpm. It's around 64 rpm. This is around 64. Right. This is around 64. Okay. So I hope you got this answer that this is around 64 rpm. You have answer over 5.9 to 4 point. Next problem. I'll give you time to read this question and then we will solve. The hub diameter of a propeller working under head of 12 meter is 0.35 times diameter of funnel. तो given है इस क्वेश्चन में तो given है that is hub diameter db is 0.35 times is 0.35 times diameter of outer diameter of 0.35 times outer. The turbine is running at 1000 rpm. All these things are given. Turbine is running at 1000 rpm. The vane angle at the extreme edge of the runner at outlet is 50. This is given as 50 degrees. The flow ratio is 0.6. The flow ratio is 0.6. Psi given है और आपका phi given. Angle phi is given as this is vane angle at runner outlet. This means this is given as phi. Angle phi. Phi notation speed ratio का भी हमने दे दिया था. But this is the angle phi that is given as 15 degrees. 15 degrees. The flow ratio is 0.6. Flow ratio is 0. Find the diameter of runner and boss. DO dB find करना है and discharge that is DO dB मिल गया तो discharge मिलना था ऐसे. So first and assume VW2 is 90. Assume VW2 as 90. VW2 को 90 assume करना है. That means discharge is radial at outlet. Yes. Like this phi is given. This is VR2. This is U2 equals to U1. This V2 equals to VF2. Right. Beta is 90. VW2. Beta is 90. VW2 is ये हमारा. तो पहले तो VF1 मिल जाएगा यहाँ से हमें. VF1 equals to psi under root 2G. Now H is not given. Like is it? H is not given. Or H is given. Working under head of 12. H is given. H is also given. यहाँ पे जो given है here H is also given as H is given as 12 meter. H is given as 12 meter तो आपको VF1 तो easily मिल जाएगा फिर तो कुछ करना ही नहीं. Size 0.6 under root 2 G 9.81 81 into H. H is 12. Alright.
तो आपको यहाँ से बी एफ वन मिल जाएगा अंडर रूट दिस इज 30.6, so this is 0.6, 9.206. Pf1 is 9.206 meter. Pf1 is 9.206 meter per second. Right. यहाँ से आपको Vf1 मिल गया and this Vf1 is equals to Vf2 and that is equals to that u. What is tan phi? From here, what is tan phi? Tan phi is Vf2 by u2. Right. Vf2 by u2. So what is u2? Vf2 by, right, and Vf2 is 9.206. Tan phi is tan 15. Right. Tan phi is tan 15. 34.35. That means u2 equals to 34.35. This is u2. Now what is u2 equals to? u1 equals to 5 po 60. That means outer diameter is, इसको solve कर लेंगे. Outer diameter will be 0.656. 6.656. 0.656 meter. This is outer diameter. Alright. And what is dB? dB is 0.35 times d, 0.35 times do, and that is 0.229. That will be 0.22, 0.29. That will be 0.229. Now what is discharge? Discharge Q is pi by 4 do square minus d square. सब कुछ known है यहाँ पे, इसको रख लेंगे and we will find the this, that will be 2.72 meter cube. 2.72 meter cube. You will find the answer 2.72. meter cube. Okay. Next one. Read this question. Kaplan turbine has a runner diameter 4 meter and hub diameter 1.2 meter. The discharge through the turbine is 70 meter cube per second. The hydraulic and mechanical efficiency can be 0.9 and 0.9 respectively. Assume absence of whirl at outlet, that means VW2 is 0. Absence of whirl at outlet, that means VW2 is 0. The discharge is free from the friction. Discharge is free from the friction. Estimate net available head on the turbine. Power develop. दो चीजें फाइंड करना आपको. H यहाँ पे फाइंड करना. हेड गिवन नहीं है, आपको यहाँ पे उसको
फाइंड करना पड़ेगा। ऑलराइट, हेड यू हैव टू फाइंड एंड पावर डेवलप मींस शाफ्ट पावर। यू हैव टू फाइंड शाफ्ट पावर डेवलप मींस आपको यहाँ पर शाफ्ट पावर फाइंड करना है। Okay, let's see what is given here. I'll give you 1 minute to, again to read this question. Once again, read this, and then we will read. Discharge is free from. इसका क्या मतलब है, ये भी हम सॉल्व करें क्वेश्चन तो भी मैं आपको दिखाऊंगा। Okay, I'm giving you 1 minute to try this question. यहाँ पे एक चीज रह गई है, स्पीड रेशियो। यहाँ पे एक चीज रह गई है, that is speed ratio is equal. ये भी गिवन है, स्पीड रेशियो भी गिवन है, स्पीड रेशियो इज 2, that is speed ratio is given as equal. Okay, so let us see what is given and what we have to find. जो गिवन है, given is runner diameter is 4 meter, runner diameter, that is outer diameter of runner, that is 4 meter, 4 meter, and hub diameter is 1.2. TB, hub or boss diameter is 1.2 meter. Discharge rate turbine is 70 meter cube second, 70 meter cube per second. Hydraulic and mechanical efficiency, hydraulic and mechanical efficiency 0.9 and mechanical efficiency is 0.9 and 0.93 आपको दोनों given है. Absence of ball, VW2 is 0. Another thing that is given here is VW2 is 0 and friction is 0, that we will consider later on. और speed ratio है 5. 5 is given as 2.0 and that is equals to U1 by under root 2. Now U equals to 2 under root 2. Now H आपको find करना है. You have to find net head available. राइट, अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए सब में ऑलमोस्ट हेड आपका गिवन था, लेकिन यहाँ पे हमें हेड फाइंड करना. हेड आप कैसे फाइंड करेंगे? नाउ वी हैव टू फाइंड हेड. कैसे फाइंड करेंगे? एक तो हेड यहाँ पे है, मतलब एक तो हेड हमारे पास यहाँ पे है. दूसरा एक हम जो लिखते हैं अपना हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, दैट इज गिवन. हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, व्हाट इज हाइड्रोलिक एफिशिएंसी? Pw1U1 बाय, अगर Bw2 0 है तो दिस इज आवर हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, Bw1U1 बाय G. Bw1U1 बाय Gh, दिस इज आवर हाइड्रोलिक. Now hydraulic efficiency is given, Bw1U1 equals to this time into. Now Bw1U1 is hydraulic efficiency. What is hydraulic efficiency? 0.9 into 9.81. अभी तक जितने हमने क्वेश्चन किए सब में आपका हेड गिवन था, यहाँ पे हमें हेड फाइंड करना. 8.81
8.82। यहाँ से हमें VW1 U1 मिल जाएगा, दैट इज इन द टर्म्स ऑफ हाइड्रोलिक at 8.82. Just you try this question. I will just wait. So from here you will get this. Okay. एक तो आपको ये इक्वेशन मिल गई एच में, और दूसरी इक्वेशन जो हमें चाहिए वो है एरिया ऑफ फ्लो डिस्चार्ज। हमें जो एच चाहिए, जो एच का फॉर्मूला हम यूज करेंगे, दैट इज हमने पढ़ा था VW1U1 by G प्लस V2 स्क्वायर बाई 2 V2 स्क्वायर बाई 2G प्लस हेड लॉसेस। ये मैंने आपको बताया जो टोटल एनर्जी अवेलेबल है एट द इनलेट, टोटल एनर्जी अवेलेबल एट द इनलेट, उसमें से कुछ पार्ट आपका वर्क डन में जाता है, कुछ पार्ट डिस्चार्ज साथ चला जाता है, और कुछ लॉसेस होते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको कहा गया है फ्रिक्शन लॉसेस जीरो, राइट? डिस्चार्ज इज फ्री फ्रॉम फ्रिक्शन, डिस्चार्ज इज फ्री फ्रॉम फ्रिक्शन, दैट मीन्स हेड लॉसेस जीरो, HL इज जीरो। क्यों? क्योंकि आपका जो डिस्चार्ज है फ्री फ्रॉम ये फॉर्मूला कहाँ से आता है, ये हमने कल के लेक्चर में इसको डिस्कस किया हुआ है इन द प्रीवियस लेक्चर। कल का लेक्चर जो था जिसमें आप रिएक्शन टर्बाइन पढ़ रहे थे, सेकेंड पार्ट ऑफ रिएक्शन टर्बाइन, फ्रांसिस टर्बाइन, उसमें हमने इसको डिस्कस किया। तो एच आप देख लेंगे, तो हमें जो एच बन जाएगा दैट इज VW1U1 बाई G प्लस V2 स्क्वायर बाई 2। राइट, तो VW1U1 हमें मिल गया ये 0.9 G, यहाँ से 0.9 H हो जाएगा सिंपली। व्हाट इज V2? हमें V2 फाइंड करना है, एंड व्हाट इज V2? V2 कहाँ से मिलेगा? VF1 इक्वल्स टू VF2 एंड दैट इज इक्वल्स टू V2। क्यों? क्योंकि आपका जो डिस्चार्ज है, दिस डिस्चार्ज इज रेडियल एट आउटलेट। इफ दिस डिस्चार्ज इज रेडियल एट आउटलेट, दैट मीन्स दिस इज बीटा इज 90, तो जो आपका V2 है दैट इज इक्वल्स टू VF2। एंड एक्सियल फ्लो टरबाइन के लिए, कैप्टन के लिए ये VF2 और VF1 सेम होता है, एंड दैट VF2 इज इक्वल्स टू V2। तो आपको VF2 मिल गया ऐसे। तो आप डिस्चार्ज डिस्चार्ज यहाँ पे गिवन है, गेस डिस्चार्ज इज गिवन एज, दोनों डायमीटर्स गिवन है, दोनों डायमीटर्स गिवन है, तो आप सिंपली वहां से फाइंड कर लेंगे। डिस्चार्ज इज 5/4 DO स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर। यहाँ से VF1 मिल जाएगा आपको, डिस्चार्ज इज गिवन here at 70 मीटर क्यूब पर सेकेंड। 70 डिवाइड बाई 5/4 DO स्क्वायर माइनस DB, राइट, DO स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर बाई DB। इसको सॉल्व कर लेंगे आप एंड यू विल गेट VF1। मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, VF1 इज 6.12, दिस विल कम एज 6.12 मीटर। दिस इज VF1। तो VF1 मिल गया, एंड दिस VF1 इक्वल्स टू VF2 एंड VF2 इज इक्वल्स टू V2। तो आपको V2 मिल गया 6.1। नाउ H इक्वल्स टू VW1U1 बाई G प्लस V2 स्क्वायर बाई, तो व्हाट इज VW1U1? यहाँ समझ लिया था, VW1U1 इज दिस GH, G कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स 0.9 H ओनली, प्लस V2 स्क्वायर 6.12 स्क्वायर बाई 2.9। ऑलराइट, इसको सॉल्व कर लेंगे एंड फ्रॉम हियर यू विल गेट H। At H is 0.1 here, from here you will get H 6 only to find 6.12 square
divide by h 19.08. This will come as 19.08. यहाँ से आपको h मिल गया, h नेट हेड मिल गया आपको। एक तो आपको यही फाइंड करना था, व्हाट इज नेट हेड एंड पावर डेवलप्ड। नेट हेड मिल गया, now what is power developed? You found the net. This is our one of the answer. एक पार्ट हमें यही फाइंड करना था, this is our, एक तो आपको ये मिल गया। दूसरा पार्ट जो हमें फाइंड करना था दैट इज पावर। हमें एक एफिशिएंसी गिवन है, ओवरऑल एफिशिएंसी दैट इज शाफ्ट पावर बाय वाटर पावर। जो भी आपको पावर डेवलप फाइंड करना दैट इज यू हैव टू फाइंड शाफ्ट पावर। नाउ फ्रॉम हियर शाफ्ट पावर इज ओवरऑल एफिशिएंसी इनटू वाटर पावर। शाफ्ट पावर अगर किलोवाट में चाहिए तो ओवरऑल एफिशिएंसी आपको गिवन है 0.93 एंड दैट इज rho GQH by 1000. From here you will get the power in kilowatt. Now overall efficiency आपको given है, this efficiency is not overall efficiency. Alright, this is given as overall efficiency. Overall efficiency हो जाएगी that is mechanical power and mechanical efficiency into hydraulic efficiency. Right, दो efficiency आपको यहाँ पे given, mechanical efficiency and hydraulic efficiency। overall efficiency थी, ये आपको mechanical efficiency given। So mechanical efficiency into hydraulic efficiency is overall efficiency. तो एवरीथिंग एल्स इज गिवन हियर, तो आपको यहाँ से जो शाफ्ट पावर होगा वो मिल जाएगा। मैकेनिकल एफिशिएंसी इज 0.93, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी इज 0.9, रो इज 1000 कैंसिल हो जाएगा दैट इज जी 9.81 to 70, h is 19.1 डिवाइड बाय 1000। यहाँ से जो मिलेगा दैट विल बी योर शाफ्ट पावर एंड दैट विल कम एज, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 10978। 10978। राइट, लेकिन जो बेसिक चीजें समझने की इस क्वेश्चन में वो ये, हाउ यू यूज दिस फार्मूला। ये फार्मूला क्या चीज है? ये फार्मूला सिंपल ये है कि जो नेट हेड है, नेट हेड इज वर्क डन पर सेकेंड पर यूनिट वेट। जो नेट हेड होता है इनलेट पे, दैट इज इक्वल टू वर्क डन पर सेकेंड पर यूनिट वेट। जो रनर हो गया प्लस जो एनर्जी डिस्चार्ज होती है, राइट, जो एनर्जी आउटलेट में, एनर्जी आउटलेट, जो आउटलेट पे एनर्जी बची प्लस उसमें से कुछ जो एनर्जी आपने दिया उसमें से कुछ रनर को ट्रांसफर होगी वर्क डन पर सेकंड पर यूनिट वेट, कुछ एनर्जी आपको डिस्चार्ज साथ चलेगी और कुछ एनर्जी जो फ्रिक्शन है उसको फ्रिक्शनल लॉसेस की वजह से कुछ एनर्जी आपको लॉस्ट हो गई। द सम एनर्जी इज बीइंग लॉस्ट divide and at outlet inlet. Okay, I'm not understanding your question. Why dia at outlet and inlet different? What is the meaning? You understand the meaning of diameter? What kind of question is this? If there is something, right, अगर कोई शाफ्ट है तो उसका इनलेट आउटलेट डायमीटर अलग होगा। इनलेट और आउटलेट का इसका क्या मैं आंसर दूंगा? इनलेट एंड आउटलेट डायमीटर इज डिफरेंट, राइट। If this is a shaft, right, this will have two diameters, right? One is at inlet, other is at outlet. I think you want to ask something else. You are not clear with your question. Next one. This is not inlet and outlet diameter जो हम यहाँ पे यूज करते हैं। इनलेट आउटलेट डायमीटर जो हम यूज करते हैं दैट इज इन द प्रेस सिस्टम। यहाँ पे जो हम यूज कर रहे हैं दैट इज दिस।
के हब डायमीटर एंड बॉस डायमीटर। जो एरिया ऑफ फ्लो है यहाँ पे चेंज किया, अगर आप वाकई इंटरेस्टेड है तो आप सुन लेंगे। ये है हमारा एरिया, इतने जो ब्लेड्स के ऊपर से जो हमारा फ्लो, राइट। इनलेट आउटलेट पे एरिया हमारा यहाँ पे डायमीटर अलग नहीं है। इनलेट और आउटलेट पे हमारा डायमीटर इस केस में अलग नहीं है, जो आपका फ्रांसिस टर्बाइन पढ़ा था वहां पर, क्योंकि यहाँ से हम इन कर रहे हैं और यहाँ पे आउट हो रहे हैं, राइट। दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग एरिया ऑफ फ्लो सेम। एरिया ऑफ फ्लो at inlet is equals to area of flow at outlet. ये same, that's why this is same, area of inlet at area of outlet at same, alright। we are not taking different area of, जो आप बात कर रहे हैं एरिया फ्लो डिफरेंट होता है, डायमीटर डिफरेंट होता है इनलेट एंड आउटलेट में, दैट इज इन द फ्रांसिस टर्बाइन, दैट इज इन द फ्रांसिस टर्बाइन। और वो हम इसलिए अलग लिखते हैं क्योंकि हमें एरिया ऑफ फ्लो कन्वर्जिंग चाहिए, लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, राइट। उसको भी मैंने कल एक्सप्लेन किया था कि जो आपका VR2 है एंड VR1 है, दैट विल बी डिफरेंट, राइट। दिस VR2, sorry, here the VR2 and here VR, this VR2 will be greater than VR1, so pressure change in the runner will be different। तो इनलेट आउटलेट डायमीटर मैंने आपको बताया था, टोटल एनर्जी चेंज कल का लेक्चर आप देख लेंगे, सेकंड पार्ट ऑफ रिएक्शन टरबाइन, उसमें आपको समझ में आ जाएगा टोटल एनर्जी चेंज कैसे होता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, एक्सियल फ्लो टरबाइन है, यहाँ पे एरिया फ्लो एट इनलेट एंड एरिया फ्लो एट आउटलेट बोथ आर सेम, राइट। ये एरिया फ्लो एंड एरिया फ्लो दोनों के सेम है। इनलेट आउटलेट डायमीटर यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे जो डायमीटर है दैट इज बॉस डायमीटर एंड हब डायमीटर, ऑलराइट, सॉरी बॉस डायमीटर एंड आउटर डायमीटर यहाँ। और एरिया फ्लो हमें इतना लेना है, तो सिंपल से मैथमेटिक्स है, पाई बाय 4 डी स्क्वायर, ये समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। ये अगर ये एरिया फ्लो आपको चाहिए होगा तो आप क्या लिखते हैं, राइट, पाई बाय 4 डी इनसाइड डायमीटर, पाई बाय 4 डी आउटसाइड डायमीटर स्क्वायर माइनस पाई बाय 4 डी इनसाइड डायमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम डिफरेंट चीज ले रहे हैं। आप जो पूछना चाह रहे हैं आई थिंक कि आप थोड़ा सा कंफ्यूजन है, उसको आप पूछ लें। द फ्रांसिस टर्बाइन या रिएक्शन टर्बाइन लेट आउटलेट डायमीटर वहां पे अलग होता है, जस्ट टू इंक्रीज द प्रेशर, ताकि वहां का प्रेशर अलग हो जाए। VR2 should be greater than VR1। सिंपल बर्नौलीज इक्वेशन की वजह से आप एरिया फ्लो कम कर देंगे, आपकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, आपका जो प्रेशर है दैट विल चेंज एंड दैट चेंज इन प्रेशर विल ट्रांसफर टू द रनर एंड दैट इज व्हाट कॉल्ड रिएक्शन। इसी की वजह से हम इसको कहते हैं रिएक्शन टर्बाइन, ओके। आई होप यू गॉट योर आंसर। We'll move towards the last question for today. Propeller reaction turbine of runner diameter 4.5 meter is running under at 48 rpm. The guide blade angle at inlet is 145 degrees and the runner blade angle at the outlet is 25 degrees. The direction of wave, at 25 degrees to the direction of wave. The axial flow area of the water through the runner is 30 meter square. At area flow given है, that is A. If the runner blade angle at inlet is radial, here the theta is 90. Runner blade angle at the inlet is radial, right? इस केस में आपको ये inlet मिलेगा. Determine hydraulic efficiency of the train. Right. Discharge through the turbine, power developed by the ये सारी चीजें आपको फाइंड करनी है. तो रीड दिस क्वेश्चन एंड ट्राई टू ड्रॉ द वेलोसिटी ट्रायंगल. पहले आपको यहाँ पे वेलोसिटी ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा, इसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. फर्स्ट ट्राई टू ड्रॉ द वेलोसिटी ट्रायंगल.
Propeller reaction turbine of runner diameter is 4.5 meter and is running under at running under at not running under running at 48 rpm. Let us try first. Let us see what is given here. Let us first see what is given here. Let us first see what is given. Solution for this question. Let us see first what is given here. Outer diameter is given as 4.5 meter. Outer diameter is given as 4.5 meter. All right. Outer diameter is given as 4.5 meter, and n rpm is given as 48 r 48 rpm. N is given as 48 rpm. Area of flow is given as 30 meters square. Of course, area of flow at inlet and outlet here is area of flow at inlet and outlet is same. AF1 equals to AF. Alright, of course, जब area of flow same होगा तो आपका velocity of flow भी यहाँ पे same होगा. Now, let us try to draw the velocity triangle in this case. Let us try to draw the velocity triangle in this. Alright, the guide blade angle at the inlet is 145 degrees. 145 degrees. The guide blade angle at the inlet is 145 degrees. That means here something like this. और जो आपका 140 जो अल्फा है, let us use a different color so that we can understand it better. Right here the alpha is 145 degrees. Here the alpha is 145. Here the alpha is 145 degrees. Here the alpha is 145 degrees. Here the alpha is 145 degrees. Alpha is 145. Now this is your alpha. ये आपको given. Theta is 90. This is theta and theta is थीटा यहाँ पे 90 डिग्री से और ये ट्राइंगल है यहाँ पे तो सब कुछ here everything else is here everything else is here. This is VR2. VR2, this is V2, this is VF2, this is VW2, this is U2. Okay, this is V1, this is VR1, this is U1, and this is V. Right, this is VW. Okay, and VR1 equals to ये आपको ट्राइंगल आपको ये एंगल है 145 डिग्री यहाँ पे. तो वेलोसिटी ट्राइंगल करेक्ट बनना बहुत जरूरी है अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, किसी भी क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं. अगर आप सॉरी हाइड्रोलिक मशीन्स के, तो आपको पहले वेलोसिटी ट्राइंगल ड्रॉ करना ही पड़ेगा. बाकी सारी चीजें गिवन है. आपको जो पूछा गया है लेट अस सी हाइड्रोलिक एफिशिएंसी. व्हाट इज हाइड्रोलिक एफिशिएंसी? जो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी आपसे पूछी गई है, don't know what happened. We have to draw it again. मैं एक बार फिर से ड्रॉ कर देता हूँ जल्दी से. There was some problem. ये आपको automatic deleted हो गया सब कुछ, but let us draw first. देख लेंगे आप डायग्राम आपको करेंगे. This is VR2, this is V2, VF2. This is
alpha, and this is 1. Guys, BR1 versus BR1, and this is सर इसका लोअर ट्रायंगल अपोजिट क्यों बना है? दिस इज व्हाई आई एम टेलिंग यू, दिस इज व्हाट यू हैव टू टेक केयर ऑफ. द एंगल हियर इज गिवन एज अल्फा. अल्फा इज गिवन एज 145 डिग्रीज. अगर आप इस साइड बनाएंगे तो 145 डिग्रीज नहीं बनेगा, राइट? दिस इज 145 डिग्रीज. एंड सर इज दिस ट्रू दैट गेट आईएएस में टॉप रैंक्स के लिए आईआईटी एनआईटी के स्टूडेंट ब्राइब देते हैं, लेकिन जो लोअर रैंक्स लाकर एमटेक करते हैं वो असली टॉपर होते हैं? बट आई डोंट अंडरस्टैंड अबाउट द ब्राइब. लेकिन जो आपने लास्ट में लिखा है वो सक्सेसफुल होते हैं. ऑफकोर्स दे आर सक्सेसफुल. अगर आपने एमटेक कर लिया है, उसके बाद आपने पीएचडी कर ली है, ऑफकोर्स यू विल बी सक्सेसफुल. लेकिन देर इज नथिंग लाइक ब्राइब इन आईआईटीज एंड देर इज नथिंग लाइक ब्राइब इन आईआईटीज एंड एनआईटीज. यू जस्ट फोकस ऑन योर स्टडी. तो ऐसा कुछ नहीं है, यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन योर स्टडी. देर इज नथिंग लाइक ब्राइब. एंड जहां तक आपके सक्सेसफुल होने की बात है, ऑफकोर्स यू विल बी सक्सेसफुल वंस यू आर इन आईआईटीज फॉर एमटेक एंड पीएचडी. यू विल आल्सो गेट चांस फॉर द पीएचडी अब्रॉड. अब्रॉड में भी पीएचडी कर सकते हैं. तो ऑफकोर्स आप सक्सेसफुल होंगे अगर एक बार आप आईआईटीज में पहुंच गए. लेकिन ब्राइब जैसा कुछ भी वहां पे नहीं, राइट? आपको एग्जाम देना है, आपको क्वालिफाई करना है, आपको अपनी रैंक लानी है. देयर इज नथिंग लाइक ब्राइब इन देयर. ओके, इन सब बातों पर आप ध्यान नहीं देंगे, आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए. ओके, तो हमें जो फाइंड करना है, लेट अस सी हाइड्रोलिक एफिशिएंसी ऑफ द टरबाइन. नाउ व्हाट इज हाइड्रोलिक एफिशिएंसी? टरबाइन की जो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी है, दैट इज BW1 BW1 U1 minus BW2 U2 by, like BW1 U1 minus BW2 U2 by GH. दिस विल बी योर हाइड्रोलिक एफिशिएंसी. आप देखेंगे इसमें क्या क्या आपको गिवन है, क्या क्या आपको फाइंड करना है. ओके, so let us first start from the inlet triangle. Inlet, this angle is phi, this angle is beta, right? Alpha आपको गिवन है inlet triangle से, from inlet, from inlet triangle. Alright, from inlet triangle you have to find this angle. ये angle tan 180 minus alpha, of course 180 minus alpha, and that is equals to VF1 by VF1 by. All right, now from here what is VF1? VF1 by tan 180 minus 145, that is 35 degrees, right? This is 35 degrees. इसको आप सॉल्व कर लेंगे, you will get. And what is U1? आप एक बार ड्रॉ करके देखेंगे, आपको खुद से समझ में आ जाएगा. राइट, अगर वो 90 से ज्यादा है, दैट मीन्स कि आपका ये ट्रायंगल, अगर आपने ऐसे दिया है, दिस इज लेस देन, दिस इज अल्फा ना, आपको जो अल्फा ड्रॉ करना है, दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेन और अब्सोल्यूट वेलोसिटी. इनके बीच का जो एंगल है, ये इनके बीच का एंगल, आपको वो एंगल आपको दिख जाना चाहिए कि जो डायरेक्शन ऑफ वेन, व्हाट इज अल्फा, राइट? मैंने पहले लेक्चर में बताया था व्हाट इज अल्फा. अल्फा को आप ड्रॉ करेंगे जो जेट की वेलोसिटी है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन, उसके बीच में जो एंगल है, यहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ मोशन हम दिखाएंगे वो ऐसे समथिंग लाइक
इस डायरेक्शन ऑफ मोशन और जो वेलोसिटी ऑफ जेट है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ जेट, उनके बीच का जो एंगल है दैट इज 145। तो आप ऐसे ही बना पाएंगे, अदरवाइज इसको आप ड्रॉ नहीं कर सकते। दिस इज 35 डिग्रीज, हियर इट इज। इसको सॉल्व करो आप पहले एक बार, फिर आप डिस्कस करेंगे। डायमीटर्स आपको गिवन है 4.5 मीटर, एन गिवन है तो आप यू यहाँ से फाइंड कर लेंगे, यू इज पाई डी नॉट एन बाई 60, एंड पाई डी नॉट एन बाई 60 दैट इज हाउ मच इज यू, 11.31 मीटर पर 11.31 मीटर पर सेकेंड। दिस यू वन मिल गया, तो यहाँ से डी एफ वन मिल जाएगा, फ्रॉम हियर यू विल गेट डी एफ वन, और वी एफ वन मैं डायरेक्टली देता हूँ, काफी टाइम हो गया इस क्वेश्चन में। 1.9 मीटर वी एफ वन मिल गया, और यहाँ पे आपको दिख रहा है इस ट्राइंगल से दैट इज वी डब्ल्यू वन इक्वल्स टू यू वन, एंड दैट इज इक्वल्स टू 11.31 मीटर। आपके पास वी डब्ल्यू वन है, आपके पास यू वन है, आपके पास वी एफ वन है, राइट। आपको जो चाहिए वो है वी एफ टू। हमें इस एच, यहाँ पे एच गिवन नहीं है, एच भी चाहिए होगा, राइट। तो एच के लिए फ्रॉम आउटर ट्राइंगल, आउटर ट्राइंगल भी यूज करेंगे, आउटर ट्राइंगल, from outer triangle of course, from outer triangle tan phi, what is tan phi, pf2 by u2 plus pw2, राइट। तो vf1 vf2 तो सेम होगा, यहां से आपको vw, यहाँ पे vf1 क्या है, vf1 इक्वल्स टू vf2, क्योंकि एरिया फ्लो सेम होता है, तो आपको यहाँ से सब कुछ नोन है, vf1 नोन है, u1 नोन है, राइट, and this is equals to u2, u2 equals to u1 equals to pi dn by 60, that is 11. तो यहाँ से bw2 आ जाएगा, and that will be 5.67, 5.67, 5.67 मीटर पर सेकेंड, 5.67 मीटर पर सेकेंड, राइट, that will be 5.67 मीटर पर, ओके। तो आपको bw2 मिल गया। व्हाट इज v2, v2 इस ट्रायंगल से आप देख लेंगे, अंडर रूट br2 स्क्वायर v2 प्लस सॉरी bf2 स्क्वायर प्लस bw2, यहाँ से bw2 मिल जाएगा, v2 मिल जाएगा सॉरी 9.74। ये सारी चीजें आपको मिल गई। नाउ यू जस्ट हैव टू फाइंड h। व्हाट इज h, मैंने आपको बताया था वर्क डन पर सेकेंड, लेकिन यहाँ पे bw2 जीरो नहीं है, तो जो वर्क डन होगा दैट इज bw2 माइनस u2 बाई g, ये एनर्जी ट्रांसफर है, प्लस v2 स्क्वायर बाई 2g, लॉसेस यहाँ पे भी गिवन नहीं है, तो लॉसेस यहाँ पे भी आप नेग्लेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे आपको सब कुछ नोन है, bw1 u1, bw2 u2, v2 सब कुछ नोन है, दैट h विल कम एज, मैं लिखता हूँ 11.33, 11.33। Now the hydraulic efficiency is bw1 u1 minus bw2 u2 by g, alright, and that will come as 57.5, okay। हाइड्रोलिक एफिशिएंसी मिल गया आपको, h मिल गया, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी मिल गया। दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट इज डिस्चार्ज, एरिया फ्लो इनटू वेलोसिटी ऑफ फ्लो। एरिया फ्लो आपको 30 गिवन था, वेलोसिटी ऑफ फ्लो है 7.92, एंड दैट विल कम एज, वेलोसिटी ऑफ फ्लो हमने फाइंड कर लिया 7.92, एंड दैट विल कम एज 237.6, 237.6 मीटर क्यूब पर। एंड द थर्ड वन इज रनर पावर आपको फाइंड करना है, रनर, एंड दैट इज रो क्यू bw1 u1 माइनस bw2, राइट। तो आपको इसको सॉल्व कर लेंगे, अब यहाँ पे कुछ नहीं, सब कुछ आप फाइंड कर चुके हैं। 15156.12 किलो वाट में आंसर आएगा, दिस विल बी योर आंसर, राइट। सो आई होप कि आपको ये सारे आंसर्स मिल गए, ओके।
तो ये जो फार्मूला है, बार बार इसकी मैंने आपको पहले बताया था, इसकी इंपॉर्टेंस हो, ये फार्मूला कुछ नहीं है, जो एनर्जी आपने सप्लाई की है उसमें से कुछ वर्क डन पर सेकेंड में है, कुछ डिस्चार्ज सच जाएगा, कुछ लॉसेस। राइट, डिस्चार्ज साथ प्रेशर भी था, लेकिन प्रेशर एटमॉस्फेरिक, अगर एटमॉस्फेयर को ही डिस्चार्ज होता है पहले, तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो जनरली जीरो ही होगा, क्योंकि जो डिस्चार्ज है दैट इज टू द एटमॉस्फेयर। तो सिर्फ B2 लेंगे। ये कल मैंने एक्सप्लेन किया था, इस चीज को आप देख लेंगे, अगर आपको समझ नहीं आया तो एक बार फिर से आप समझ में आ जाएगा। और इसके अलावा इसमें लॉसेस आ, तो फिर लॉसेस यहाँ पे गिवन नहीं थे, यहाँ पे लॉसेस गिवन नहीं है, तब वो उसको कंसीडर नहीं करना, अदरवाइज गिवन होगा तो आपको लॉसेस भी कंसीडर। ओके, तो आई होप कि ये सारी चीजें आपको क्लियर है, राइट। Thank you very much. Thanks for the joining. You subscribe to this channel and also get your plus subscription on Unacademy. Use this code RaviPY to get 10% of the discount in your annual, sorry, in your subscription fees, right?